Uh, Network protocol. Okay, sir.
Yes, ma'am. Okay. Recording in progress.
Can by everyone? Yes, sir. Any queries still over here, guys? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे यार Recording in Similar progress. device को connect करने के लिए और जो स्ट्रेट को यूज कर रहे हैं तो अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए कुछ तो चेंजेस होंगे तब भी ना. So this is what we are having. We are having optical fiber cable, or we can say fiber optic cable. Okay. So when we talk about the optic, what does it mean the optic? Always represents the signals. Optic represents the glass. Optic talk about the mirror. इन तीन चीजों के बारे में ऑप्टिक बात कर क्या lenses, mirrors, ये सारा stuff. ग्लास कोर्स को यूज करता हूँ ग्लास को यूज करता हूँ अपने कंस्ट्रक्शन में के लिए और ये रेज ऑफ लाइट को यूज करता हूँ यहाँ पकड़ी का लग रहा है टॉप अगले मेरे मुन्ना जी घूमा हूँ फिर भाई यहाँ से साला नेट की मार पकड़ा पकड़ा कमान Record progress. जो पूरे वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी के लिए यूज किया जा रहा है एंड it is having the more lifespan as compared to the twisted and coaxial cables. ये लॉन्ग रेंज के साथ साथ ज्यादा लाइफ स्पैन भी कंटेन करता है आपके इस बीच आपके ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल के बीच. ये आपके डेटा को काफी ज्यादा SX, अंडर बेस BX, अंडर बेस FX, एक्सेट्रा इथरनेट वेरिएंट्स के ऊपर ये काम करता है. अब SX, BX, FX क्या है? Connectors. It represents optical fiber cable. Third, in which topology you are using this fiber optic cable. This is the FX, BS, SX and
टाटा की बड़ी बकर है। हाँ, ऐसे काम करता है। रख के यहाँ रिकॉर्ड वाला, उसके बाद देखूंगा In progress. प्रोग्रेस। यहाँ पे Yes, sir. यहाँ पे किसी कुछ पूछ रहा है? नो सर। हेलो सर। यस सर वो ग्रॉस फाइबर इसके पहले वाला पॉइंट का सर वो तो एक बार दिखा दीजिए सर। कौन सा? सर ऊपर में सेकंड वाला, और उसके सेकंड वाला पॉइंट जो था। नाम क्या है उसका? सर स्ट्रेट ग्रॉस और है ना सर, तीनों कनेक्टर। जरा जल्दी करेंगे प्लीज। हाँ सर बस हो गया। ठीक है सर, यही सर हो गया। हो गया? हो गया सर, हो गया। ओके सर। Okay. Now we are moving on the next term. That says types of network. जो क्या कहता है? Types of network. So in the types of network are defined in such a way कि if you pick any subject, if you pick cyber security, if you pick cloud architect, if you pick cloud networking, so they are having their own set of types of network. आप कोई भी पिक करोगे, कोई भी स्ट्रीम को पिक करोगे, उस आईटी के स्ट्रीम में, हर एक आईटी के स्ट्रीम में टाइप्स ऑफ नेटवर्क अपने अकॉर्डिंगली उसको डिफाइन किया गया। कहीं पे हम लोग टाइप्स ऑफ नेटवर्क को स्टोरेज पर्पस के ऊपर डिफाइन कर रहे हैं, कहीं पे टाइप्स ऑफ नेटवर्क को हम डेटा ट्रांसमिशन के ऊपर डिफाइन कर रहे हैं, समवेयर वी आर डिफाइनिंग द types of network over the storage, somewhere we are defining the types of network over the data transmissions. So we are having the multiple sections over the types of network. जो हमारे multiple sections है types of network. Here we are looking the types of network over the connection. यहाँ पे हम types of network देख रहे हैं connection mode के ऊपर. The first one says PAN, stands for personal, or we can say that the private area network. Second one says LAN, local area network. Third one is MAN, metropolitan area network. Fourth one we are having that stands for wide area network. पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रो। And if I talk about the fifth, says CAN, वाइड stands for नेटवर्क, campus area. कैंपस एरिया नेटवर्क। The range of PAN is 5 to 10 meters. मेटावर्स मीटर्स। The LAN says 50 kilometers. The MAN says 50 kilometers. The wide area network says 50 plus kilometers. And campus says user defined. These are things in the types of network we have. Okay. So when we talk about the PAN, what is a PAN or a personal private area network? So before going on the PAN, I want to make one statement is, the statement says कि all the types of network are defined by, yes, any query? Hello. Yes.
Sir, LAN and MAN both range are same. Yes. Okay, sir. Okay, sir. So over here, if I say the types of network, so before going on the explanations, I want to make one statement. The statement says, okay, this is the types of network we are having only two, LAN and WAN. Rest are defined on the basis of their working on the basis of their connection needs. बाकी सारे जो डिफाइन किए गए हैं वो सिर्फ कनेक्शन नीड्स के ऊपर कनेक्शन टाइप के ऊपर डिफाइन किए गए हैं. ऐसे हमारे पास सिर्फ दो ही टाइप्स ऑफ नेटवर्क होते हैं जिनको हम बोलते हैं लैन और वैन. बाकी सारे जितने भी हैं उन्हीं के सुपरसेट हैं, उन्हीं के सबसेट हैं और उन्हीं के ऊपर डिफाइन किए गए हैं. रेस्ट आर द सुपरसेट, सबसेट एंड डिफाइंड ओवर देम ओनली on the basis of their connectivity. If you will go in the complete explanation of PAN, LAN, WAN, MAN, CAN, so you will find they all are derived from the two statement says LAN or WAN. अगर आप खुद से पढ़ेंगे दोनों के स्टेटमेंट को तो पता चलेगा कि ये जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क है वो डिफाइन किया गया है आपके LAN और WAN के ऊपर. ठीक है, तो PAN क्या है? PAN says the personal or the private area network which is set up for a specific task. That can be says your home Wi-Fi, that can be says your company networks. That is called the personal or private area network, where we are having a limited set of connectivity where we cannot connect for where we need some to connect. My AC ठीक है तो करूँगा ना नेट में दम सड़िया ये प्रॉब्लम है यार. Recording in progress. मैन जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया
बकरी भी भाई बकर भाई तो खींचिएगा यार निकलते हैं Recording in progress. This is it. Campus scenario means defining
split of area on the basis of usage. कोई नहीं आते हैं कट्टा के। अब समझ में आ गया सबको? कनेक्टेड नेटवर्क होता है वो भी कैन में कंसीडर होगा। कौन सा? जो वेल कनेक्टेड नेटवर्क होता है रेलवे का, रेलवे का? हाँ, जो पर्टिकुलर उसी एरिया में या फिर यूज होता है उसी एरिया, वहाँ पे आपको अपना फोन नंबर शेयर करना पड़ता है और वो पर्टिकुलर सिर्फ उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर होगा। अगर आप उस प्लेटफॉर्म पे हैं और जैसे ही आप प्लेटफॉर्म के ऊपर से बाहर आप जैसे प्लेटफॉर्म चेंज हो जाए, या दैट इज द कैप। और जैसे ही आप उस रेलवे स्टेशन से बाहर जाएंगे आप उस चीज को यूज नहीं करोगे। एज सून एज यू आउट फ्रॉम स्टेशन यू कैन नॉट यूज दैट पर्टिकुलर फ्री रेलवे वाईफाई। एज सून एज यू आर इन दैट पर्टिकुलर एरिया यू कैन यूज इट। आप जब तक उस पर्टिकुलर एरिया में हैं आप तब तक यूज उसको कर सकते हैं। दैट इज द कैंपस एरिया, करेक्ट? Sure, sir. Okay. Any more queries over here, guys? Very well, guys. So let's move ahead with the next topic called as topology. Anyone can tell me what is topology? कोई बता सकते हैं topology क्या है? पैटर्न ऑफ कनेक्शन। The pattern of connections. Very well. Anyone else? Very well. So it is a structure of the network which says how all the components are going to interconnect with each other. If I talk about the types, we have bus, ring, star, tree, mesh, hybrid. These are the 6 types that we have. ये हमारे 6 types है जो हमारे पास है. So topologies always represent the structure, the pattern, the architecture, the diagram, the scenario of the network. The structure, pattern, diagram, architecture, blueprints, जो मर्जी आया आप बोल सकते हैं. किसका? नेटवर्क. क्यों? So there is nothing as such कि we can just come up with a device. Okay, you want to use the internet, let me do it for you. आपको internet use करने पर सेट किया और यूज करने लगे. Not at all. Just we inserted and we are trying to use. Nothing as such. ऐसा नहीं होता. The main important factor over here is topology, because the topology completely refers to the architecture point of view of the networking segment. Networking segment में topology complete architecture point of view को focus करता है. So what does it say? It says कि my first motive is to provide the reliability, provide the connection to the each and every single user, each and every single device. मतलब यहाँ पे क्या है कि इसका पहला है कि जितने भी यूजर्स हैं, जितने भी डिवाइसेस हैं, सबको कनेक्ट करना और साथ ही साथ डेटा रिलायबिलिटी को भी प्रोवाइड करना. सो द कनेक्शन ऑफ डिवाइसेस आर गोइंग टू बी व्हिच फॉर्मेट टू गिव यू द कंप्लीट डेटा रिलायबिलिटी. तो यहाँ पे मेरा जो कनेक्शन ऑफ द डिवाइसेस है वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए जहाँ पे हम डेटा रिलायबिलिटी को हैंडल कर सके एंड वेयर वी कैन हैंडल द मल्टीपल लोड्स, जहाँ पे हम लोड्स को हैंडल कर सके. That is a thing. And there it got defined over the 6 types. यहाँ पे ये अपने 6 types के ऊपर define किया है. Understood? So where we are implementing, just a second. Where we are implementing the LAN, where we are implementing the PAN. तो जब भी हम LAN, PAN या कोई भी set of the network define करते हैं, तो वहाँ पे हमारे कहीं ना कहीं से topology भी include होते हैं. Right now over here, you all with me. Somewhere in the background, the topology is working. कहीं ना कहीं पे हमारे बैकग्राउंड में टोपोलॉजी काम कर रहा है हम लोगों को यहाँ पे कनेक्ट हो. दैट इज नाउ प्लीज. यस Sir, one time you told that area diagram, all this three, four names, what you said? वेयर कैन यू प्लीज मेक द थिंग्स मोर क्लियर? आप जरा और क्लियर कर सकते हैं?
Sir, you told that topologies are defined as per area diagram. I never said 2-3 more example you told. I just said the Recording in progress. here is your bus topology. यहाँ पे आपका bus topology है. Okay. Now the thing says, what is the bus topology says? The bus topology says कि what like whatever the nodes you are having doesn't matter. आपके पास कितने number of nodes है उससे फर्क नहीं पड़ता. All the number of nodes are going to connect over a single cable in the series format. जितने भी number of nodes है वो एक केबल के ऊपर series format में connect होंगे, and for establishing the connection with the particular nodes we will use only one cable. This is the motto of bus topology. ये motto है आपका bus topology का कि आपके पास कितने भी number of nodes होंगे, आप सिर्फ एक केबल को यूज करेंगे उस नेटवर्क में डिवाइसेस को कनेक्ट करने. That's it. And that particular cable is known as a backbone cable. वो जो particular cable होता है उसको backbone cable के नाम से represent करते हैं. Why? Because if that particular cable goes down, अगर उस केबल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपका पूरा बस टोपोलॉजी खराब होगा, complete network failure state होगा. If the problem occurs over that single cable, so your bus topology is going to have the network failure state. That is the thing. And over here, every node is connected with each other in the series format. हर एक node that we call it stations over here. The nodes are represented stations in the bus topology. They all are connected in the series format. वो सारे series format. So when we say कि they all are connected in the series format, so what will happen? They will broadcast it. वो हमेशा data को broadcast करें. Every time the data broadcast will happen. Every time. This is what it says. ये क्या? If I talk about its advantages, low cost. इसका जो implementation है वो काफी low है. Familiar design, the design is always familiar. Moderate data speed, not too fast, not too slow, just a moderate data speed.
means the amount of data speed that can lead towards the work progress. सिर्फ उतना ही डेटा स्पीड जो आपके वर्क प्रोग्रेस को कैरी ओवर करने में हेल्प कर सकते हैं. That's all. If I talk about disadvantage, difficulty in troubleshooting single interface. What does it mean? Difficulty in troubleshooting single interface. Over here, suppose the problem occur over here. Suppose the problem occur over here. Suppose problem occur over here. Problem occur over here. Suppose problem occur over here. इन सारे टर्म्स के ऊपर आपका प्रॉब्लम होगा. So if the problem is occurring over on this terms at any point, प्रॉब्लम अगर कहीं पे भी अकर हुआ, ये जो सर्कल्स जो है आपके प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करते हैं, so कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम अकर हुआ, so what is going to be? You are going to face the complete network failure. यहाँ पे आपका complete network failure का state होगा. Here you are going to have the complete network failure state because you are having the single cable, you are not having the multiple cables. यहाँ पे आपके पास सिंगल केबल है, मल्टीपल केबल्स नहीं है जो आपके फेल ओवर टर्म्स को बचाएगा. That is what the bus topology says. And single interface you reach towards the network failure. When we are having the network failure, then it is, do you think it will be possible to find out if from where the problem rises? आप ये सोच सकते हैं कि ये easy होगा क्या कि ये find करना कि problem कहाँ से generate हुआ? Not even possible. Possible नहीं. So that is why it says difficult in troubleshooting. Means finding the problem, resolving that particular problem called as troubleshooting. So this is called as troubleshooting. Difficult in troubleshooting. Troubleshooting. Now, says reconfiguration is difficult. अब यहाँ पे कहता है reconfiguration is difficult. So suppose I am adding one device in between these two terms. हम यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक device add कर. So what I have to do? I have to cut the cable over. यहाँ पे हमें क्या करना होगा? Cable को cut करना. So again, as I cut the cable, these all the devices that present after this one, they are not going to have the connectivity. Again network failure. हम जैसे ही यहाँ पे केबल को कट करेंगे, ये सारे लोग डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और फिर नेटवर्क फेलियर. और सपोज आई एम कनेक्टिंग इट एट द बॉटम. सपोज करते हैं कि हम यहाँ पे बॉटम में कनेक्ट करें. आई एम कनेक्टिंग इट एट द बॉटम. सो व्हेन आई एम कनेक्टिंग देम एट द बॉटम and it is having the moderate data speed over the calculated way, and it always broadcasts the signals, broadcasts the data. So when I will run the command to configure, it is again going to damage my connectivity. जब अगर हम यहाँ पे कोई भी कमांड रन करेंगे कनेक्टिविटी के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए, तो वो सबके पास ब्रॉडकास्ट करेगा. और साथ ही साथ मॉडरेट डेटा स्पीड है, तो डेटा तो और लो हो जाएगा आपके जैसे ही एक नई डिवाइस कनेक्ट होंगे. तो इन द बस टोपोलॉजी व्हाट इट सेज, इट टेल मी द एग्जैक्ट नंबर ऑफ मशीन्स दैट यू वांट टू कनेक्ट. तो बस टोपोलॉजी में हम एक टर्म कहते हैं, क्या कहते हैं कि आप हमको बताइए कि आपको कितने मशीन्स को कनेक्ट करना है. क्यों? आफ्टर डिप्लॉइंग द बस टोपोलॉजी, वेरी डिफिकल्ट टू ऐड अ न्यू डिवाइस. बस टोपोलॉजी को एक बार कॉन्फ़िगर करने के बाद नई डिवाइस को ऐड करना, नए टर्म्स को ऐड करना काफी डिफिकल्ट होता है. इफ इट इज गोइंग ऑन द गो, यू कैन कनेक्ट 100, इट विल वर्क. एक बार चल रहा है, आप 100 डिवाइस कनेक्ट कर दो, वो चल देगा. लेकिन कुछ भी हो, वो बाद में जब आप कनेक्ट करोगे तो वो फेलियर स्टेट में लेके जाएगा. दैट इज व्हाट द बस टोपोलॉजी सेज. अंडरस्टूड गाइस? Yes, sir. Any queries over the bus topology? किसी को यहाँ पे bus topology में कुछ पूछना है? मुझे तो नहीं आया समझ. Quite. So let's move towards the next topology. What is the next topology says? Ring topology. So let me copy it for you. Just give me a second. This is what your ring topology says. Okay. So the ring topology's first statement says कि it is like a bus topology. Ring topology क्या कहता है? ये एक bus topology के जैसा है, but with connectivity. Obviously, कैसे? अगर हम यहाँ पे, if what I do, if I connect this starting point
and end point together. अगर हम ये start point और end point एक साथ connect करते हैं, तो it is going to have some kind of the closed structure. ये कुछ closed structure के form में हो जाएगा. So that closed structure we can say that is in the form of ring. Okay, because ring never says the circle one. No, any closed structure if all the things are closed tightly packed. अगर हम बात करें कि कोई भी structure अगर closed है tightly packed है तो उसको हम ring topology कहते हैं. That we call it name as a ring topology. So here as well, if I connect the starting point and end point together, so it is going to form a ring topology. अगर हम यहाँ पे इसके starting point और end point को दोनों को एक साथ connect कर दें तो वो एक ring topology के term पे ही जाए. Yes, sir. That is a 386, correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes, very nice. So now, this is the thing. Now what it says inside the ring topology. अब ring topology में ये क्या कहता है? The ring topology says कि all the devices are connected with each other with the help of single cable. Here as well, the single cable only. यहाँ पे भी single cable होगा. Okay. Now, the thing says कि every computer is a neighbor of each and everyone. हर एक कंप्यूटर जो है यहाँ पे हर एक डिवाइस जो है वो एक दूसरे का नेबर है. मतलब node number 1 is the neighbor of node number 2. Node number 2 is the neighbor of node number 3. Node number 3 is the neighbor of node number 4. Node number 4 is the neighbor of again node number 1. And what does it represent? It says कि whatever the data is being transmitted, whatever the data is being transmitted, जो भी data यहाँ पे transmit हो रहा है, the receiving node will retransmit the data to its neighbor node automatically. जो भी receiving node होगा वो अपने neighbor node को वो data transmit कर देगा automatically बिना किसी term का. This is what it says. Meaning says over here is suppose if I am sending the data from node number 1 to node number 2. अगर हम यहाँ पे node number 1 से node number 2 पे data send कर रहे हैं. So node number 1 is the sending one, node number 2 is the receiving one. So what will happen? The node number 2 is receiving the data, so it will retransmit the data to the node number 3. ये node number 3 को data transmit कर देंगे. And as soon as the node number 3 is receiving the data, again here the node number 3 is receiving, so what it will do? It will retransmit the data to the node number 4. ये क्या करेगा? Node number 4 data transmit कर देगा. Correct? So as of now, the node number 4 is the receiving one. So what it is going to do? It is going to send the data again to the node number 1. Why? Because now node number 4 is the receiving one. So node number 1 will send the data to the, node number 4 will send the data to the node number 1. Again, node number 1 is now receiving, so what it will do? It will again retransmit the data to the node number 2. So in such a way, what it says inside this topology, the data will be in the continuous loop. The loop and the data transmission is always formed in a clockwise direction. जो यहाँ पे data होगा, जो यहाँ पे data transmission होगा, जो data का flow होगा, वो हमेशा एक loop structure में convert हो जाएगा और जो loop structure चलेगा, वो हमेशा clockwise direction में चलेगा, ना कि anti-clockwise direction. Okay? यहाँ पे इस तरीके का टर्म इसलिए हो रहा है क्यों? क्योंकि डेटा को पता ही नहीं है कहाँ पे एंड करना है. Here, this such kind of the formation is occurring. Why? Because the data doesn't know where to get terminated. There is no any kind of the termination point of the data. So that is why the data is traveling in this structure. यहाँ पे डेटा को पता ही नहीं है कि हमको टर्मिनेट कहाँ पे होना है, तो इसीलिए डेटा यहाँ पे मूव करता रह रहा है, चलता रह रहा है in the continuous. If I talk about its advantages, तो network management. Network management, suppose I am having one device, I want to test कि it can handle the load or not, I can use this topology. मेरे पास एक डिवाइस है, हमको टेस्ट करना है कि ये लोड को हैंडल कर पाएगा नहीं या ये इतने टर्म्स को हैंडल कर सकता है नहीं, तो हम इस टोपोलॉजी में यूज कर लेंगे. My 5 team members, my 5 particular teams are working on the same project and they want the minutes update, I can form this topology. अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास minutes of the minutes update करने 5 टीम मेंबर्स हैं, 5 टीम खुद के पर्टिकुलर टीम है जो काम कर रही है और उनको बताना है कि आपके क्या क्या अपडेट्स हो रहे हैं, तो हम वहां पे एक रिंग टोपोलॉजी बना देंगे. उनके पास ऑटोमेटिक सारे डेटा सर्कुलेट करते रहेंगे, अपडेशन सर्कुलेट करते रहेंगी. दैट इज अ थिंग. कॉस्ट
the cost is same as it is your bus topology. Cost यहाँ पे bus topology के term पे आता है. Reliability, the data reliability is over here because the data is in the closed structure. No one can leak the data. यहाँ पे data leakage का कोई chances possible नहीं है. क्यों? क्योंकि ये एक closed structure में है. Because it is in the closed structure. If I talk about the disadvantage, then difficulty in troubleshooting and failure. Difficulty in troubleshooting and failure. What does it mean? So suppose the problem occurs over here. The problem occurs over this point. Suppose this problem occurs at this point. Problem यहाँ पे अगर or the problem occurs at this point और problem यहाँ पे अगर any two point or anywhere else. Problem कहीं पे भी अगर होता है. So as per the thing, if a problem occurs at any point, same as the bus topology, you are going to have the complete network topology. यहाँ पे बस टोपोलॉजी के ठीक जैसा ही अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम अगर होगा तो आप कंप्लीट नेटवर्क फेलियर के स्टेज पे जाएंगे. क्यों? दे ऑल आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर. हर कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. तो वन फेलियर लीड्स टुवर्ड्स द कंप्लीट फेलियर. एक फेल हुआ तो सारे लोग फेल होंगे. दैट इज द थिंग. सो व्हेन यू रीच टुवर्ड्स द नेटवर्क फेलियर, सो अगेन डिफिकल्ट इन ट्रबल शूटिंग. आपका यहाँ पे डिफिकल्ट इन ट्रबल शूटिंग है एंड यू आर हैविंग द सिंगल इंटरफेस, तो दैट इज व्हाई यू आर हैविंग द फेलियर. तो यहाँ पे नेटवर्क फेलियर के चांसेस ज्यादा हैं. डिफिकल्ट इन ट्रबल शूटिंग, आपको यहाँ पे ट्रबल शूट करने में काफी परेशान, बिकॉज यू विल ऑलवेज लीड टुवर्ड्स द नेटवर्क फेलियर. आप यहाँ पे हमेशा नेटवर्क फेलियर के स्टेज में चले जाएंगे. इफ आई टॉक अबाउट रिकॉन्फ़िगरेशन इज डिफिकल्ट, सो देयर इज नो वे, वी नीड टू कट दैट केबल. यहाँ पे और कोई तरीका नहीं है, हमें यहाँ पे केबल को कट करना ही पड़ेगा. So as soon as I cut the cable over here, means I am adding the device over here. As soon as I cut the cable over here, so again it is going to damage my network connectivity. फिर ये मेरे network connectivity को damage करेगा ही करेगा. That is the thing. The configuration is difficult because it is always in the closed loop. ये हमेशा यहाँ पे closed loop में है. Correct? We are having a delay. What does it mean? The delay says the latest update will go at the end. यहाँ पे latest update यहाँ पे जो आपका लेटेस्ट अपडेट है वो हमेशा इंड में जाएगा. क्यों? बिकॉज इट विल सर्कुलेट. वो हमेशा सर्कुलेशन में होगा. जो पहले होगा वो पहले जाएगा. द फर्स्ट वन विल क्रॉस द पाथ फर्स्ट, द सेकंड वन विल क्रॉस द पाथ एट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, लाइक दैट इन अ सीक्वेंस. So every time the updation, every time the things delayed, and at some point the thing will occur where you are going to have the network traffic jam, where the complete network failure will occur. कहीं ना कहीं पे ये जाके एक नेटवर्क ट्रैफिक जैम को क्रिएट कर देगा जहाँ पे आपका कंप्लीट नेटवर्क फेलियर का स्टेट आ जाएगा. So that is why we say the delay statement over here. तभी हम यहाँ पे कहते हैं delay statement. So this is all about the ring topology. Any queries? यहाँ पे आपका ring topology था. किसी को कुछ पूछना है? No, sir. सर सर ये टोपोलॉजी जो बनाते कैसे सर? हेलो Understood by everyone? सबको समझ में आया ये पॉइंट? Yes sir. Yeah. Very nice. So what is our goal with next? We have our system. It's a way to start the following quickly. ये
Recording in within this progress. topology mostly. And this star topology is widely used inside an organization for the network implementation. ये जो स्टार टोपोलॉजी है वो ज्यादातर आपके ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन के लिए. एंड इन द अनदर टर्म वी आल्सो कॉल इट एज अ डोमेन सर्वर इन्वायरमेंट और डोमेन इन्वायरमेंट, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. इसको हम एक और अनदर लैंग्वेज में भी बोलते हैं डोमेन इन्वायरमेंट और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी हम लोग इसको बोलते हैं. So when we are talking about all those things, so we need one server where we can connect the multiple devices with that particular server. हम यहाँ पे एक सर्वर का बात करते हैं जहाँ पे एक सर्वर से मल्टीपल नोड्स को कनेक्ट करते हैं. बस जो भी चीजें रेगुलेट होंगी that will be getting regulated from the servers. Or whatever the things you want to regulate, that will be get regulated from the server. If I talk about the advantage, efficient in troubleshooting, the problem occur over here. Suppose I find out that my system is not having the internet connections. over here, मेरा जो सिस्टम है वो इंटरनेट कनेक्शन उसको नहीं मिल यहाँ पे नहीं. नो प्रॉब्लम, माय रेस्ट कनेक्टिविटी इज वर्किंग. मेरा बाकी जो भी कनेक्शन है वो चल रहा है, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट इज द थिंग. सो आई कैन फाइंड इट आउट, आई कैन ट्रबल शूट विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं और हम यहाँ पे ट्रबल शूट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम का. नेटवर्क कंट्रोल, ऑल द थिंग्स आर गेटिंग हैंडल्ड बाय द सर्वर, सो एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल. सारी चीजें सर्वर के साथ है, सो वी कैन कंट्रोल द एवरीथिंग. कॉस्ट इफेक्टिव. इफ आई टॉक ऑन द जेन्युइन पर्पस, अगर हम जेन्युइन पर्पस से बात करें तो जो कॉस्ट इफेक्टिव है वो काफी कम होता है. मतलब एज कम्पेयर टू द बस और रिंग टोपोलॉजी ज्यादा होता है एंड एज कंपेरेटिवली लो होता है. बस और रिंग टोपोलॉजी से थोड़ा ज्यादा होता है और बाकी सब पर्पस से कम होता है भैया. सो इट इज अ काइंड ऑफ द कॉस्ट इफेक्टिव लाइक यू कैन इट. एंड एज पर इफ यू आर फोकसिंग ऑन द क्लास, सो यू कैन कवर अप इट अप टू 100 or 200 रुपीज पर. आप यहाँ पे अगर क्लाउड के ऊपर जा रहे हैं तो 100-200 रुपए महीने का अपना सर्वर चला सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द यूजर्स. बाकी सारे यूजर्स के ऊपर डिपेंड करता है. इजिली एक्सपेंडेबल, इट इज वेरी इजी टू कनेक्ट, इट इज वेरी इजी टू कॉन्फ़िगर द न्यू क्लाइंट ओवर हियर, वेरी इजी. ओके, so easy expandable, it depends upon the hub and switch ki how many connections, how many number of nodes we can connect over here. It says it will do. High data speed, so everything is under the control. We are controlling the network, so we can say what amount of speed will be provided to each and every device. हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि मेरे number of the devices जो भी हैं उनके ऊपर कितने स्पीड चाहेंगे, वो कितने टर्म्स को यूज करेंगे, कैसे कैसे यूज करेंगे. If I talk about disadvantage, central point failure. तो यहाँ पे अगर मेरा यहाँ पे अगर मेरा सर्वर फेल ओवर होता है, so I will complete reach towards the network. अगर यहाँ पे मेरा सर्वर पूरा फेल होता है तो हम यहाँ पे कंप्लीट नेटवर्क फेलियर के स्टेट में होंगे. केबल, here we'll be using only one type of cable. If I started the connectivity with Cat5e cable, so I will make all the connections over the Cat5e cable. यहाँ पे अगर हमने कनेक्शन को स्टार्ट किया Cat5e केबल को यूज करके, तो जितने भी कनेक्शन है वो Cat5e केबल को ही यूज करेंगे, उसके अलावा और कोई केबल यूज नहीं करेंगे. That is what the start topology is. Understood guys? समझ में आया? Any queries over here guys? Yes, sir. It's a start topology में किसी को कुछ पूछना है? No sir. Noted? Note down कर लिया सबने? Yes sir. Yes sir. कर रहे हैं सर. And one more thing, here you can go for the direct connectivity. It never broadcast the message. ये कभी भी आपके मैसेज को broadcast नहीं करता. If the two persons are connecting over here and here, so it will be between both of them only. It never broadcast the message. अगर ये दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये रेड बॉक्स वाले, तो इन दोनों के बीच में ही वो कनेक्टिविटी रहेगी, इन दोनों के बीच में ही वो बात करेंगे. बाकी और किन्हीं के बीच में वो सर्कुलेट नहीं होगा, वो ब्रॉडकास्ट नहीं होगा. So it never broadcast the message. Okay. Yes sir. Now, let's move to the next topology. What it says? It says about the tree topology. ये क्या कहता है? Next जो topology है वो कह रहा है I am a tree topology.
Recording in progress. Here you can see tree topology. What the tree topology says, it combines the characteristics of the bus and star topology. आपके bus और star topology के characteristics को combine करता है. Correct. Now we have just discussed the star topology fresh. So let's come up over here over the diagram and let's discuss the star topology. Over here, I think that the diagram is quite visible to everyone. So over here, we can see, we can focus, we can say that whatever the number of nodes we are having, they all are connected with one central point that is on the topmost node. Correct? यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जितने भी नोड्स यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल हैं, वो सारे नोड्स एक सेंट्रल पॉइंट के साथ कनेक्टेड, that is topmost node. And in the tree topology says it is always going to follow the parent-child hierarchy. ये हमेशा एक parent-child hierarchy format को carry over करता है. Okay, the parent-child hierarchy. So here you can see here is a parent-child hierarchy that we are having. The topmost node root is known as a root node or parent node, and the rest are known as a child. जो सबसे ऊपर वाला जो नोड होता है जिसको हम लोग सबसे टॉप मोस्ट नोड बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम पेरेंट नोड या रूट नोड, और उसके नीचे जितने भी होते हैं उनको हम बोलते हैं चाइल्ड नोड. उनको क्या बोलते हैं हम? चाइल्ड नोड. सो इट इज गोइंग टू फॉलो दिस सेट ऑफ आर्किटेक्चर. वो इस सेट ऑफ आर्किटेक्चर को फॉलो करता है. एंड इन दिस ट्री टोपोलॉजी द फेल ओवर स्टेट इज वेरी लेस. जो फेल ओवर स्टेट है वो काफी कम होता है, और द ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा इज वेरी efficiently reliable over here. जो डेटा ट्रांसमिशन होगा वो काफी efficiently और reliable state के ऊपर यहाँ पे होगा. This is the thing what it says. This is the topology which is widely used in your broadband connections, your Wi-Fi connections and the landline connections. ये topology आपके ज्यादातर यूज होता है आपके Wi-Fi connections, आपके broadband connections, आपके landline connections के ऊपर. So you all have seen, if you are having the landline connections or if you all are having the Wi-Fi connections, the person who is coming to configure is coming from a long way. Outside your house, he will have one pole where he will do some kind of the connectivity. Again, he will take one cable and he will reach towards your house, and where you want to install your telephone or where you want to install your router, he will install one white color device. And from there he will give you the connections. Like this, if your neighbor is having, so he will do the separate connection. Like this, again anyone is having, so he will do the again separate connection for them. So here every node, every user will have the separate connections from them for their own uses. And where the one statement was is like that word I am just forgetting, like where we used to divide the terms, where we used to divide the connections. I am using the 399 pack, so the 1 Gbps will be provided to me only. Someone is using the 20 Mbps or 20 Mbps speed that can be. So here the divisions of the networks, the division of the packs is quite easy. यहाँ पे नेटवर्क को डिवाइड करना, उनके पैक्स को, यूजर के पैक्स को डिफाइन करना काफी इजी होता है. सो कभी आपने अगर आपके घर पे अगर राउटर लग रहा होगा या फिर लैंडलाइन लगा होगा, तो आपने देखा होगा कि जो भी लोग कॉन्फ़िगर करने आते हैं वो कहीं दूर से आ रहे हैं. आपके घर के बाहर एक पोल होगा जहाँ पे वो कुछ केबल्स को कनेक्ट करेंगे, फिर वहां से आपके घर के अंदर एक केबल लेके आएंगे, फिर वहां पे एक व्हाइट कलर का डिवाइस इंस्टॉल करेंगे, फिर वहां से आपके राउटर को कनेक्ट करेंगे. करेक्ट. और ठीक उसी तरीके से अगर आपके घर के पड़ोसी को भी वो नेटवर्क चाहिए तो उनके लिए वो सेपरेट कनेक्शन आएगा. ठीक उसी तरीके से उनके पड़ोसी को भी चाहिए तो उनके लिए सेपरेट कनेक्शन आएगा. तो हर किसी के लिए यहाँ पे सेपरेट कनेक्शन आता जाएगा. ऐसा नहीं है कि एक ही कनेक्शन के ऊपर ये सारी चीजें हो. नो. एंड इट ऑलवेज सेज कि आई विल डू द पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी. ये हमेशा कहता है कि हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी करेंगे. मतलब एवरी यूजर विल हैव देयर ओन सेट ऑफ पॉइंट्स. हर एक यूजर का अपना अपना पॉइंट होगा. मिनिमम आई नीड द 2 कनेक्शंस मोड ओवर हियर. यहाँ पे 2 कनेक्शन डिवाइसेस का होना जरूरी है. मिनिमम. मैक्सिमम इट कैन गो टू 5, मैक्सिमम इट कैन गो टू 10, मैक्सिमम वो 5, 10, 15 पे भी जा सकता है. बट मिनिमम व्हेन आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट द एंड यूजर, आई नीड दैट 2 कनेक्शन. अगर हम किसी एंड यूजर को कनेक्ट कर रहे हैं तो उन दोनों के बीच में 2 कनेक्शंस होना जरूरी. ओके, दिस इज व्हाट ये कहता है आपका ट्रीटमेंट. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द एडवांटेजेस, easily expandable. You can expand it easy. You can connect as much as user you can without any kind of the problem. Easily manageable. The management of this tree topology is quite easy. The management of this tree topology is quite easy. Error detection is also easy.
यहाँ पे एरर डिटेक्शन भी काफी इजी है. Suppose I find it out like over here, यहाँ पे यूजर अपना काम नहीं कर पा रहा. Here the user is not able to use the internet. Okay, no problem. Detection. We detected. Point to point wiring we just understood. Point to point wiring को भी just हमने समझा. और ब्रॉडबैंड कनेक्शंस को भी अभी समझ. ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन और पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग को फॉलो करता है. ओके, नाउ ये तो था हमारा एडवांटेज. दिस वाज द एडवांटेज. द वन थिंग दैट आई हैवंट डिस्कस अबाउट द बस टोपोलॉजी. यहाँ पे मैंने बस टोपोलॉजी के बारे में आपको नहीं बताया. सॉरी फॉर दैट. सो द थिंग्स इज it follows the bus topology characteristics as well. ये bus topology के characteristics को भी follow करता है. And what is the characteristic of bus topology? That says कि for connection of the node, you are only going to use one cable for connection. आप यहाँ पे एक ही केबल को यूज करेंगे अपने कनेक्टिविटी के लिए जो बस टोपोलॉजी करता है. That is it. So here we will use only one cable for connecting the every, not the multiple cables. यहाँ पे हम सिर्फ एक ही केबल को यूज करेंगे अपने नोड्स को कनेक्ट करने के लिए, ना कि हम यहाँ पे मल्टीपल केबल्स को यूज करेंगे अपने नोड्स को कनेक्ट करने के लिए. नो, वन केबल फॉर एवरी नोड्स. हर केबल एक ही केबल यूज होगा आपके पॉइंट टू पॉइंट टर्म पे आपके नोड्स को कनेक्ट करने के लिए. That's it. That's it. Okay. So till over here is understood by everyone. यहाँ तक सबको समझ में आया या कोई डाउट है इस टोपोलॉजी? Quite well. So let's move towards the disadvantage. So disadvantage says high cost. The cost is quite high over here. We all have seen if you place a call right now as well, if you place a call to get the Wi-Fi connections, so they will say कि sir the Wi-Fi connection hasn't reached to your state. If you pay us extra then we can do it for you. आप अगर अभी भी कॉल करोगे, कुछ स्पेसिफिक रीजन्स हैं अभी ऐसे जहाँ पे अभी तक वाईफाई कनेक्शन नहीं पहुंचा है, so if you will call them and they will ask them to give you the connectivity, so what they will say, वो क्या कहेंगे कि आप हमको कुछ एक्स्ट्रा पे कीजिए, हम आपके घर तक ला देंगे. तो इवन कंपनी नोज कि the implementation of this thing is cost quite higher. जो implementation है इसका जो इंस्टॉलेशन है वो काफी कॉस्टली आता है. तो they go for the purposes where they can recover the cost. ये सिर्फ उसी कनेक्शन मोड में जाते हैं जहाँ पे वो इन कॉस्ट को रिकवर कर सके. Failure, the failure chances is not that much, but the failure consists if your topmost goes down. अगर आपको ये topmost node जाता है तो सारे नेटवर्क फेलियर होंगे. If your route topmost node goes fail, it means that every node will goes down. This is what it is. The reconfiguration is difficult. Now the things are getting conflict. अब यहाँ पे दो चीजें conflict कर रही. Reconfiguration is difficult but easy, expandable. यहाँ पे reconfiguration difficult है but expanding easy है. कैसे? So you can establish the connectivity. आप यहाँ पे अपने end user को connect कर सकते हैं, but from where you are raising the connection, the configuration part is difficult over there. जहाँ से आप connection को raise कर रहे हैं, वहाँ पे point difficult है. You all have experienced this thing कि you are calling to electricity board, so you are getting a call at your home. आप electricity board पे call कर रहे हैं, तो call आपके घर पे आ रहा है. आप कहीं और call कर रहे हैं, किसी और को लग रहा है you are calling someone else and the call is reaching to someone else. So the reconfiguration of difficult never leads you towards the no connection, but it will give you the network diversion, data diversion. यहाँ पे क्या होता है कि आपके डेटा डाइवर्जन क्रिएट हो जाते हैं. यहाँ पे क्या होता है आपके जो फ्लोज है वो डाइवर्ट हो जाते हैं, बल्कि फेल ओवर नहीं. So that is why it says that the configuration is difficult. You have to check the line, check everything, and then establish the connectivity. After that we are having the difficulty in troubleshooting. इसके बाद हमारे पास difficulty in troubleshooting है. So what this mean? Difficulty in troubleshooting, error detection is easy. फिर से conflict है. Here we are conflicting again. Difficulty in troubleshooting, error detection. Now, I detected I am having a headache. मैंने डिटेक्ट किया कि मेरे पास हमको हेडेक हो रहा है. क्यों हो रहा है? हो सकता है मैंने नाश्ता ना किया हो सकता है ज्यादा थका हुआ हो सकता है कि मैंने काफी ज्यादा ट्रैवल किया हो सकता है कि हम काफी ज्यादा काम कर. That can be any kind of the reason. It can be multiple sets. I haven't taken a meal. I haven't rested well. I haven't slept well. I am taking lots of the tensions. I am going with lots of the things. Might be any kind of things, correct? And every headache doesn't have the same solution. हर एक headache का same solution नहीं होता है. So in the same way, if my device is not working, the internet is not having the internet,
might be there can be the problem with any specific. यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है. So we'll go for the point to point checking over here. यहाँ पे हम point to point check पे जाते हैं. So in the year of 2023 it takes 5 hours to resolve any kind of the problem in the tree topology. 5 घंटे लगते हैं tree topology में किसी भी प्रॉब्लम को डिटेक्ट करके उसको सॉल्व करने में. एंड if you talk about in the year of 2008 and 2011 it takes week. अगर आप 2008 और 11 का बात करें तो वो हफ्तों लगते थे एक प्रॉब्लम को रिसॉल्व करने में ट्री टोपोलॉजी के. So this is all about the tree topology. Any queries? सर जैसे आपने बोला कि ये बस टोपोलॉजी पे बेस्ड है और जो कि सिंगल केबल यूज करते हैं, लेकिन सर जो फिर चाइल्ड कनेक्शंस है उसमें तो सर सिंगल केबल नहीं है. कैसे नहीं है? ये सारे सिंगल केबल ही है. सारे सिंगल केबल के साथ आपके सारे नोड्स तो डिफाइन हो रहे हैं ना. अगर हम यहाँ पे एक ही चीज को कनेक्ट करने के लिए एक और केबल लगा दें, फिर एक ही चीज को कनेक्ट करने के लिए केबल लगा दें, तो ये मेरा बस टोपोलॉजी के कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो नहीं कर रहा है. ये हुआ आपका मल्टीपल केबल्स. अंडरस्टूड? अब समझ में आ गया? जल्दी से स्क्रीनशॉट लिया करें. ठीक है? Very nice. So the next topology that we have in what? Mesh topology. जो हमारा next topology है वो है mesh topology. So let's quickly copy the characteristics. Definition over here. इसको कनेक्ट भी करना होगा. In All the number of progress. nodes are going to connect in a different way. मेश टोपोलॉजी बस इतना कहता है कि जितने भी नंबर ऑफ नोड्स होंगे आपके पास वो सारे नोड्स एक दूसरे के साथ सेपरेट. अपने सराउंडिंग्स में देख रहे हैं वो सारे आपके and this is the topology which is used for wireless and wired networks. ये ज्यादातर आपके wired और wireless network के ऊपर यूज करता है and we use this topology for world wide connectivity for wide area network implementation. हम इस टोपोलॉजी को ज्यादातर यूज करते हैं अपने वाइड एरिया नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जहां where our critical concern is network failure. जहां पे हमारा कंसर्न क्या है? नेटवर्क फेलियर का. that we doesn't go to the network failure state at any cost. जहां पे हम किसी भी कॉस्ट पे किसी भी टर्म पे नेटवर्क फेलियर के स्टेट में ना जाए. Who is this guy? Yes, Abid, tell me. Yes, Abid, tell me. This is the thing that we are having. Okay? ये चीजें हैं जहाँ पे हमारा जो मेश टोपोलॉजी वो ज्यादातर फोकस करता है क्रिटिकल कंसर्न के. कंसर्न किसका है? नेटवर्क फेलियर का. यहाँ तक समझ में आया? टिल ओवर इज अंडरस्टूड. वेरी वेल. सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एडवांटेजेस. एडवांटेजेस क्या है? व्हाट आर द एडवांटेजेस? रिलायबल.
very reliable. It never leads you towards a network failure. ये कभी भी आपको नेटवर्क फेलियर के स्टेट की तरफ लेके जाएगा नहीं. फास्ट कम्युनिकेशन, एवरी कनेक्शन इज बेस्ड ऑन द सेपरेट वे, द कनेक्शन इज वेरी फास्ट. यहाँ पे आपका कनेक्शन काफी फास्ट है. क्यों? क्योंकि आप सेपरेट वे में हर चीज के साथ कनेक्टेड. दैट इज द रीजन. सो वट एवर द कॉल यू मेक, दे ऑल आर बेस्ड ऑन द मेश टोपोलॉजी. जो भी कॉल आप करते हैं वो सारा मेश टोपोलॉजी के ऊपर बेस होता है.